Good evening to one and all. On behalf of school management, faculty members and students of Mount Columbus School, I take the opportunity to welcome you all in the 10th annual function of our school. Our school believes in maintaining a balance between academic and non-academic activities, which are required in building up a strong personality and an unshakable character of a student. Considering the pandemic that we are all going through this year, we are not having our stage show like we do every year, the Columbian Arena. But we really appreciate the hard work put in by our students for the virtual annual function Umeed 2020 this time. We are also pleased by the support given by the parents. It's a matter of great pride and honor for us. ऑनलाइन पटल पर कार्यक्रम देख रहे सभी स्नेही जनों का हम माउंट कोलंबस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज जब हम विद्यालय का 10वां वार्षिकोत्सव आयोजित कर रहे हैं तो हृदय में यह भावना है कि समय के अविरल प्रवाह में बहते नित नवीन ऊंचाइयों और नवीन उपलब्धियों को छूते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। विद्यालय सृजन का वह सकारात्मक बिंदु है जहाँ ऐसी पौध पल्लवित होती है जो सारी दुनिया को छाया दे सके। ऐसे पुष्प पुष्पित होते हैं जो हर शय को महका सके और इन्हीं नन्ही कलियों को अपने आशीर्वाद की तरावट से सुवासित करने का मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ, जो इस असहज समय में भी इस संदेश के साथ हमारे बीच हैं कि कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, उनमें ताकत न सही पर हौसला होगा जरूर। आस की डोरी पकड़कर गर कदम बढ़ते रहे, आस की डोरी पकड़कर गर कदम बढ़ते रहे, तय समंदर तक भी एक दिन फासला होगा जरूर, तय समंदर तक भी एक दिन फासला होगा जरूर। I am extremely grateful to Mr. Upendra Puri, our esteemed trustee, for being the special guest of our show this year. I am also obliged to Mr. Harish Chennai, Honorable Chairman Sir of our school, for being a part of our virtual annual function Umeed 2020. Hello everybody, my name is Upendra Puri and I want to first place thank you for inviting me on your annual day function. Thank you to all the students, thank you to all the parents and thank you to all the teachers. I also want to congratulate you for continuing your classes and education during this period of coronavirus. It has been very difficult period, I know, for parents because household income has been much less for everybody. Very difficult for teachers because they also faced a lot of financial problem. A very difficult period for the school because school budget was very bad this year and not growth could be done in the school activities. This year you also have a very beautiful theme about the dreams. I call the dreams as the plans for future and हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे श्री अब्दुल कलाम, उन्होंने ड्रीम्स के बारे में बहुत ऊंचे ऊंचे विचार जो हम सबको समझाए हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं उनकी एक किताब पढ़िए और उनका एक विचार जो मेरे ध्यान में रहता है वो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन से ही ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही मानव महान बनता है। तो आप जिस पीरियड से अभी गुजर रहे हैं, जिस पीरियड से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है। हमारे देश ने बड़े बड़े साइंटिस्ट बनाए हैं और इन्हीं बच्चों में से कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ वकील बनेंगे, कुछ जज बनेंगे, कुछ जर्नलिस्ट बनेंगे और कुछ किताबें लिखेंगे और सब भारत का भविष्य यही बन रहा है और ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। मैं थोड़ा 2 मिनट लेना चाहता हूँ पेरेंट्स के साथ क्योंकि ये जो समय आप अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं ये सबसे इंजॉयबल टाइम है। मेरी डॉटर अब 22 साल की हो गई है। वो मज़े का टाइम ख़त्म हो गया जब मैं उसे स्कूल में छोड़ने जाता था और स्कूल से बाद आके पूछता था क्या पढ़ाई की और कौन से दोस्त बने, और मुझे अभी भी याद है वो समय। तो इस समय ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
कि आप स्कूल के साथ एक पार्टनरशिप बनाएं, स्कूल के टीचर्स के साथ एक पार्टनरशिप बनाएं, टीचर्स को फ़ोन करें टाइम टू टाइम और पता लगाएं कि आपके बच्चे को क्या पढ़ाई दी जा रही है। अगर मौका मिले जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए तो टीचर्स से जाके मिलें। आपको पता होना चाहिए कि स्कूल में बच्चा किन से कांटेक्ट करता है, कौन कौन से लोगों से मिलता है और किन का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, इसमें आपका पूरा रोल होना चाहिए। अगर चांस मिले तो आप स्कूल की एक्टिविटीज़ में वॉलंटियर बने, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग्स को अटेंड करें, ताकि आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है और किस तरह पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे आपके बच्चे को भी कॉन्फिडेंस होगा और आपको भी कॉन्फिडेंस होगा। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है जब मेरी बच्ची छोटी थी। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को घर में थोड़ा सा उनके साथ ज्वाइन हो जाएं जब वो अपना होमवर्क कर रहे हैं या टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या अपना लेसन रिवाइज कर रहे हैं या अगले दिन का बस्ता तैयार कर रहे हैं। इससे बच्चे को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे मम्मी डैडी भी हैं। तो जब आप उनके साथ इंटरेस्ट लेंगे उनकी क्लासेस का, उनके होमवर्क का, उनके टेस्ट का, उनसे उसका उन पे बहुत असर पड़ेगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ ये पॉजिटिव थिंकिंग की। कभी भी बच्चे को ये एहसास ना हो कि उनका स्कूल या उनके टीचर या उनके फैमिली का जो लेवल है, फाइनेंशियल लेवल है, वो किसी से कम है। हमारा देश ऐसा है जहाँ पे कोई भी आदमी कुछ भी बन सकता है। वो राजा महाराजाओं के दिन ख़त्म हो गए हैं, अब सब प्रजा का दिन है और हम सब लोग कुछ भी बन सकते हैं। तो कभी भी ऐसा कोई शब्द ना निकले मुंह से बच्चों के सामने जो स्कूल के बारे में ख़राब हो या टीचर्स के बारे में ख़राब हो या मम्मी के बारे में ख़राब हो या डैडी के बारे में ख़राब हो। ये स्टूडेंट को या बच्चे को हमेशा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर हो सके तो बच्चों का टीवी पे का टाइम थोड़ा कम होना चाहिए और उनको पढ़ने के ऊपर, किताबें पढ़ने के ऊपर, ज़रूरी नहीं है कि स्कूल की किताबें हों, कोई भी किताबें हो जो जब बच्चे पढ़ते हैं उनके पास देश विदेश के जो थॉट्स हैं उनके दिमाग में जाते हैं। इससे बहुत इम्पोर्टेंस होती है। आपको भी कभी अगर समय मिले तो उनको कहानियाँ सुनाइए। छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं हमारे माता पिता ने जो हमें सुनाई हैं वो हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चों को सुनाएं। इन सब कहानियों से लेसन मिलता है और ये बच्चे सारी उम्र याद रखते हैं। 2-3 बातों के बाद मैं आपका एक बार और थैंक यू करना चाहता हूँ और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने इस पीरियड में अपनी एजुकेशन तैयार रखी। और टीचर्स का कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, पेरेंट्स का कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स का कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। जल्दी ही ये ख़त्म हो जाएगा ख़राब समय और हम लोग दोबारा क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। स्कूल की क्रिकेट टीम बच्चों का ज़रूर इंतज़ार कर रही होगी। मैं ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ अपने देश को, क्योंकि हमारे देश ने मास प्रोडक्शन से जो वैक्सीन बनाई है कोरोना वायरस की, उसमें पूरे संसार में हम सब भारतवासियों को बहुत प्राउड कर दिया है। इन्हीं बच्चों में से हमारे कुछ साइंटिस्ट बनेंगे कल और ये सब जो आज एजुकेशन चल रही है इसी की वजह से आगे हमें सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वन मोर टाइम एंड जय हिंद। To begin the show, we would pay tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge, by lighting the lamp. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिः परब्रह्म
Principal Ma'am will now brief us about the school's annual report 2020-21. Good evening, parents and my dear students. Hope you all are doing well in these trying times. Your absence in school has been very disheartening and we all are waiting to welcome you back to school. I welcome all of you today to our first virtual annual day of Mount Columbus School. We at Mount Columbus very clearly define our roles and responsibilities to meet the 21st century needs. Just a despair can come to one only from other human beings. Hope too can be given to one only by the other human beings. In these difficult and anxious times, I would like to reach out to you through this thought of Elie Wiesel. COVID-19 with its sudden upheavals has changed our routine and lifestyles. Each of us and the entire world is affected by this pandemic. Our hearts are with all those dealing with the impact of the virus around the world, and we thank all the public health experts and healthcare professionals who continue to work so hard to deal with this crisis. This is the time when we should realize the importance of helping each other and facing the situation strongly. We at Mount Columbus understand the challenges faced by the students, parents and the teachers to cater to the academic needs during the closure of the school physically and adapting to virtual learning. However, the importance of education remains consistent. Our talented and dedicated staff, both teaching and non-teaching, has been showing their care and concern for the students, working from home, preparing notes, engaging classes online for the benefits of students. Sports and games are a great way for students to develop skills, achieve goals, learn cooperation and stay physically fit. Hence, we have allotted regular periods for game activities, PT exercises and yoga. I appreciate the concern for the students and commitment to academics. The school is encouraging peer learning through the formation of WhatsApp groups with their teachers. All these will also lead to imbibing of digital skills, one of the most important literary skills of the 21st century. Mount Columbus School aims to excel in education using technology and other available resources, where the seeds of the all-round development of the children are sown at an early age. I, the principal of the school, take immense pleasure and pride to present to you a report of our activities and achievements of the past 1 year. To start with the annual report, I proudly announce that the class 10 batch of 1920 made all of us proud, giving 100% results in the CBSE board exams. This was a tough year, but the teachers and the students did not deter at all. Different departments conducted a plethora of activities to keep the students engaged in these difficult times and for their overall development. I start with the English department. The department added another feather to the cap by conducting the British Council 2019-20 activities and winning the Foundation Certificate of British Council 2019-20 for the school. Other activities conducted within the English department included English Language Day, Reading Week in the month of May and September, Rabindranath Tagore Jayanti, and attended virtual class of Australia with the students. In the department of the school, conducted the activity where the students were asked to write a short summary on any story read by them of the famous author Premchand. The Department of Mathematics had sessions for the students regarding art integration. Sanskrit department regained the Indian tradition and culture and conducted the activities asking students to recite the shlokas of the Bhagavad Gita. Science department of Mount Columbus School organized Malaria Week, where they made the students aware of the harmful effects of malaria
and ways to eradicate this disease. Other activities conducted by this department were the Biodiversity Week, World Ozone Day, International Day of Biological Diversity, and interesting games on coronavirus. Social Studies Department also contributed towards the betterment of the students by conducting e-activities like World Earth Day, Labour Day, reading of the preamble, Youth Parliament, and the first session of the Children Assembly. The most important activity of this department was the inter-school event Awarenik, in which around 20 schools from all over India participated wholeheartedly. The IT department arranged a webinar for the students on the topic Artificial Intelligence, where the students had hands-on practice too. The Art and Craft department also gave a number of opportunities to the students to utilize their time in a fruitful manner. The activities organized by this department were bouquet making with paper, snowman with disposable glasses, orange candle with the help of orange, gift box making, wallet making, to name a few. The other activities conducted by the students and the school included roller story, Mother's Day celebrations, Raksha Bandhan activities, emancipation, inter-house competition on the occasion of Independence Day, Teachers' Day, Children's Day, puppet show, panel painting, rangoli making, and tic-tac-toe. The tiny tots of the school were engaged in the following activities which they enjoyed a lot: Save Water, Janmashtami, and Grandparents' Day. Apart from the activities conducted, the students of Mount Columbus School attended capacity building program conducted by CBSE, Diksha, and Nishtha to empower and enable themselves with the competencies such as using technology and the tools effectively, applying appropriate pedagogical techniques to make the learning process connected with real life, stress-free and joyful, improving their life skills such as active communication skills to deal with the needs of the learners and the society effectively. The in-house training sessions are also organized by different departments on regular basis to strengthen the teaching skills. General body meeting of parents are held on regular basis. PTA meetings have been arranged periodically. The PTA members of our school are closely involved in most academic activities. We thank and congratulate them for their support and cooperation over the years. We believe that every year brings changes which the God Almighty protections. As we are passing through an unprecedented crisis situation in the year 2020, we are confident that we will overcome all the odds by a strong will and the ethics and pave a way for the betterment of education fraternity and the society at large. Before I conclude, let me assure that even though our students have engaged themselves in various co-curricular and life skill activities, top priority is given to academic performances, remedial teaching, extra classes, durations, class tests, different kinds of assignments, project and end-of-term examinations have kept them busy throughout. I render my thanks to our chairman sir, our entire management, my teaching and non-teaching staff, my students and all the parents who have been with us in all our activities and endeavour with maximum support and cooperation. A little progress each day adds up to big results. I wish that all of us with our near and dear ones come out of this difficult situation very soon. With this, I conclude the report. Thank you. Stay safe, stay stress-free. Thank you, ma'am. Thank you for sharing the accolades achieved by the students under your guidance. कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हुए इस शुभ आयोजन से पूर्व हम प्रथम आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणपति से जगत कल्याण की कामना करते हैं। शंकर सुत हे गौरी नंदन प्रथम आराध्य गणेश, विघ्न के हरता मंगल करता, हरो हमारे क्लेश, हरो हमारे क्लेश।
गणाधिपतेशयेन्द्रवरेण्यं गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। प्रातः स्मरणीय विघ्नहर्ता के अर्चन से पूर्ण बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बुद्धिदेव से प्रार्थना है कि अज्ञान के तम से तार कर हम सभी को नवल उजास से पूरित करें। अगली प्रस्तुति इस बात का प्रतीक है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा ही जीत है। कोरोना महामारी के कारण बनी हुई स्थिति पर भी हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हर बुराई का अंत निश्चित ही है। यही संदेश लेकर महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा की पावन स्तुति के साथ हमारे बीच प्रस्तुत हैं कक्षा 9वीं बा की छात्रा यशवी। भगवति देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषपोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि। बहुत ही सौम्य प्रस्तुति। परमेश्वरी माँ कात्यायनी से प्रार्थना है कि वे सभी क्लेशों का हरण कर संपूर्ण जगत का कल्याण करें। We will now recognize our talented students for their hard work for the session 2019-20.
to be able to see the blue sky from city buildings or get that much time to spend with family? Ever thought to care that much about your personal hygiene? Sanitizing hands every hour, maintaining distance from other person and wearing mask for hours? No, we have never gone through that and we shall never go again. But I think the habits COVID has given us should last long. We are now caring about our health. Students who were always busy in their day-to-day schedule, the schools, then tuitions, sports club, and after the day full of tensions, the night with eyes on mobile phones, are now getting time to search about themselves and create their new interests and hobbies. Also, the parents who were busy the whole day are now getting time to explore themselves. As a part of Indian culture, we used to join our hands saying Namaste to all. That time is back again to the trend. From meeting with handshake and hugs is no more in fashion. We are back again to the time of our parents and grandparents. It is true that work from home is not that easy, but every change requires a time to be adopted. COVID turned out to be something that came like a tsunami and destroyed everything, for which nothing can be done. COVID changed everything. Like we all changed, this world has changed too. And it is upon us how we adapt and how early we adapt. Our lives have been definitely affected by coronavirus, right from personal hygiene, from minor hygiene and to major economic changes. We are now seeing a different type of lifestyle. Our everyday lives too have been changed, some for the good and some not. As said by Nelson Mandela, our human compassion binds us the one to the other, not in the pity or patronizingly, but as human beings who have learned how to turn our common suffering into hope for the future. As we have always held to the hope, the belief, the conviction that there is a better life, a better world beyond the horizon. So, to adapt and get going with this new phase, let us have a look on our energetic Colombians. मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਲਾ ਸੁੱਖਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਭਲਾ ਸੁੱਖਤਾ ਹੈ ਸੁਨਾ ਸੁਨਾ ਸਾਫ ਸਾਫ ਅਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਪੈ ਪੀਤ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਓਏ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਰਹੇ ਭਲਾ ਸੁੱਖਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਭਲਾ ਸੁੱਖਤਾ ਹੈ हाथों को धो लो ना नमस्ते कर लो ना 21 दिन की लड़ाई घर से ही लड़ लो ना योगा कर लो ना कुछ हेल्दी खा लो ना इम्यूनिटी ना खोना तो हारेगा कोरोना ना पढ़ने देंगे अब इसको मिलकर इंडिया ये भगाएगा ये वायरस तो है आवारा तेरी हिम्मत आजमाएगा न बढ़ने देंगे अब इसको मिलकर इंडिया ये भगाएगा मिलकर इंडिया ये भगाएगा मिलकर इंडिया ये भगाएगा। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए हम सोए नहीं कई रातों
बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। कोरोना हारेगा जीतेगा इंडिया। कोरोना हारेगा जीतेगा इंडिया। कोरोना के उन योद्धाओं का, नर्स डॉक्टर और पुलिस वालों का सम्मान इनका दिल से करो। इनके निर्देशों को मानते चलो। कुछ दिन और मान जाओ ना। सबको तुम ये समझाओ ना। समझाओ ना। कोरोना हारेगा जीतेगा इंडिया। कोरोना हारेगा जीतेगा इंडिया। फिर से शहरों में रौनक आएगी। फिर से गाँव में लौटेगी हंसी। फिर से साथ सारे यार होंगे। ना होगी पाबंदी ना रोके कोई। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे। पटरी पे पहिए भागेंगे। गूंजेंगे खेलों के मैदान। बांटेंगे हम खुशियाँ गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान। जो साथ दे दे सारा इंडिया फिर मुस्कुराएगा इंडिया। फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया फिर मुस्कुराएगा 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 इंडिया। फिर जीत जाएगा इंडिया। फिर मुस्कुराएगा इंडिया।
के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि इन नन्हे सितारों के प्रयासों को सराहें और इन्हें वह हौसला दें कि मन का डर मिटाकर हासिल करो विश्वास को, जीत लो जमी को, झुका दो आकाश को। हे नवल पुष्प सुरभित होकर धरती पर नवल विहान लिखो, नव प्रेम भावना से पूरित फिर से नव हिंदुस्तान लिखो, फिर से नव हिंदुस्तान लिखो। धन्यवाद। Let us all cheer up for Christmas so that the Holy Spirit warms up all mankind. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Let us all cheer up for Christmas so that the Holy Spirit warms up all mankind. We would now have vote of thanks delivered by our Honorable Chairman Sir, Mr. Harish Chennai. A very, very good evening to you all. Charles Refson, the chairman, owner, and founder of Revlon, the cosmetics company, once said, "We don't sell cosmetics, we sell hope." Our theme today, this evening, for the annual day function is Umeed. और उम्मीद क्या होता है? Hope. Hope, a waking dream. This is your chairman, Harish Chennai, coming to you virtually. And I'd like to speak today to 4 groups of people. First, our administrative staff, then our students, their parents, and most importantly, the teachers. I wish to express my gratitude to our administrative staff. You have worked tirelessly. Firstly, through making phone calls and being at home and working remotely, and then coming to school as and when necessary in a staggered way, all while maintaining social distance. और ये इस पैंडेमिक में बहुत बहुत ज़रूरी है. And for that, हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करें? Thank you तो बहुत कम पड़ता है एक शब्द के नाते. The class 4 staff, आपने भी बहुत कुछ किया है. हमारे बच्चों स्कूल में नहीं होने के बावजूद you have kept the school neat, tidy, sanitized, that any moment जब स्कूल शुरू होगा तब कूदते मौज में सब बच्चों वापस स्कूल आ जाएंगे. And again, the administrative staff and class 4 staff, you have done a tremendous job in keeping the school in a beautiful state, not falling in a state of disrepair. And thank you very much for that. I'd like to continue with my dear students of Mount Columbus School. Where do I even begin? This is your chairman, Harish Chennai, coming to you and saying hello and wishing you all the very best on this annual day when our theme is hope, Umeed. I'm so proud of you today that despite the pandemic, despite the coronavirus,
we have seamlessly moved from being offline to online. And teachers have made a tremendous amount of adjustments in their teaching pattern. And I'm delighted beyond measure that you students have been able to attend classes virtually. And I'm also proud to say that this year, more than ever before, we have not missed a heartbeat. The teachers have been able to maintain both the curricular as well as the extracurricular activities, all online. And to a large extent, would have not been possible had it not been for the continuous and ongoing cooperation on your parts and being willing to adjust to what the demands and rigors of trying to be very interested in this journey of learning. Thank you. I cannot say enough of how proud I am today of all that you have done in order to be able to keep this torch and this flame of education at Mount Columbus alive, well, and I look forward to the day so much when I'm with you, my dear children. I'd like to address the parents of the children of Mount Columbus School. You have trusted us, your children. I hope and pray, मुझे उम्मीद है कि we lived up to those expectations of being able to impart a quality education for your children. मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि trust in your children, have faith in our teachers, and you have made some huge sacrifices by loaning your mobile phones or perhaps even a laptop to the children. I know how difficult it is, लेकिन फिर भी आपने बहुत कुछ sacrifice किया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके बहुत आभारी हैं। इस साल we have not been in a position to be able to afford the trophy for the best girl child as well as the top academic performer. लेकिन यकीनन अगले साल ये प्रोग्राम ट्रैक पे जरूर आ जाएगा. And we really appreciate your faith, confidence, and trust. My dear teachers, I'm so delighted and proud beyond measure of how seamlessly you people have all adjusted through this pandemic to conducting virtual classes. I am amazed of how beautifully you have been able to meet every single of your roles, responsibilities, and duties in making certain that we don't miss a single heartbeat. And for that, I fold my hands and bow my head and say thank you from my heart to yours. And all of your teachers know how very fondly I feel for all of you. Had it not been for the pandemic, I would have been there in person. But know this evening that I'm very much with you in spirit through this virtual participation from your chairman
to you. Today, I'm not addressing you as a chairman. I'm addressing you as your student. Why? Because this year, more than ever before, मुझे आप सब टीचर लोग से बहुत कुछ सीखने मिला है और उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ. धन्यवाद. And finally, my vote of thanks would be incomplete if I did not recognize Madam Principal, Mrs. Aditi Roy. Madam Principal, you are the rock of Gibraltar. You are the solid, unshakable, unflappable pillar of Mount Columbus School. For your hardness, for your harshness, for your hardness, your chairman thanks you. God bless you all. Be well, and hopefully we will be together very, very soon. Dhanyavad. Thank you, sir. We end our show with National Anthem. Da-da-da.